Okay, so hello everyone. My name is Davinder and welcome to this session and a very good evening to all of you. Can you please confirm that everything is fine with my audio and video so that we can start with the session, right? I hope everything is fine with the audio and video. So we are beginning with our session. So basically, today we are going to cover very important news. Today, the first one is ease rise financial year 26. So basically, this is EASE 8.0 that is being released recently at the website of Press Information Bureau, that is PIB. Right, we are going to understand that what exactly this EASE 8.0 is, and then we will move forward. Now, the second news is again, this is completely data-based news, wherein we are going to understand that what exactly there's a growth of digital movement over the period of time. Okay, so we have some latest data with us for the financial year 25. We are going to understand that how growth and how much growth has been seen. And then we have one news related to the RBI, wherein there was a FEMA amendment made by the RBI. So that is a very small amendment and very easy to understand as well. And lastly, we are going to discuss some of the questions which are going to be important for all of you, right? So I hope everything is fine till now. Okay. Okay, so we are moving ahead with the first news, which is ease rise. Okay, so first we will talk about the ease. So ease stands for enhanced access and service excellence. So basically, this framework was released by the government of India in 2018, right? Along with government of India, Indian Banking Association were also in this framework, wherein they are trying to make a reform which is going to help PSB, that is your public sector banks, in improving their performance. In improving their performance. So, what was the problem? The problem was that these PSBs do not have good performance. Their financial health were not in good, we can say, status. Their bad loans were all time high. Their profitability was all time low. These were the major issues, and that was hampering, we can say, the government were refunding these PSBs, so that was creating a lot of burden on the government of India as well, because refunding again and again, and we can say recapitalizing the public sector banks, will put a lot of burden on the government. And hence, at the time of 2018, government came up with the reform with IBA, that is Indian Banking Association. So we need to create a reform wherein we are trying to improve the financial health of the public sector banks. So this entire guidance is under the Ministry of Finance, which is being offered to the public sector banks. So why there is a need? As I told you that there was high NPA, bad loans were very high. Bad loans जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, यानी कि वो लोन्स जिससे बैंक अब रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जहां से कोई भी EMI रीपेमेंट नहीं आ रही है. उसके बाद पुअर कस्टमर पेमेंट, कस्टमर एट द एंड वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ PSBs. तो बेसिकली अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो PSBs के पास जाकर बैंक अकाउंट क्यों खुलवाएगा? So that was, we can say, another disadvantage with the PSBs. देन वी हैव लॉ प्रॉफिट्स, उनके ऑल टाइम लो प्रॉफिट्स है क्योंकि कोई कस्टमर उनकी सर्विसेज से हैप्पी नहीं था. देन वीक सिस्टम एंड स्लो प्रोसेसेस, उनके प्रोसेसेस, उनके सिस्टम इतने ज्यादा वीक थे दैट देयर डे टू डे ऑपरेशन वाज इनइफेक्टिव फॉर द कस्टमर्स एज वेल एंड फॉर द बैंकिंग एज वेल. सो ईज वाज स्टार्टेड, इसे स्टार्ट किया गया था व्हाई? टू इंप्रूव द बैंक परफॉर्मेंस को इंप्रूव. Okay, could you please confirm that everything is fine? Could you please confirm that everything is fine? Okay, just wait for a second. Uh, Let me just correct it.
ओके। वेट फॉर अ सेकेंड। Okay, could you guys please confirm that everything is fine with my audio now? Is it fine now? Can you please confirm in the live chat? Okay. Thank you. Thank you, Gautam. Thank you for this. Okay, so we are continuing with the slide where we left. Okay, so we were discussing here. Okay, we were discussing here where we were discussing कि why this ease was started. ठीक है, तो हमने बात करी कि हाँ भी there was a lot of problem in the PSBs. ठीक है, PSBs में बहुत सारी परेशानी थी, right? Then they try to improve it, they try to improve the customer, we can say services, they also improve their digital technology, and the overall agenda was to make the PSBs bank stronger and future ready so that they are competitive enough with the private banks, ताकि private banks के मुकाबले खड़े हो सके. ठीक है, अगर ये banks अच्छे नहीं चलेंगे then otherwise these performance are going to be bad, and overall in future these are going to be a burden on the government of India, which we do not want. अच्छा, ठीक है. सो ओवर द पास्ट हाउ मच वी हैव इम्प्रूव. देखिए हर साल ईज फ्रेमवर्क निकाला जाता है, ईज रिफॉर्म निकाले जाते हैं. Why every year it is being released? Why we want that PSB's reforms are revised as per the current scenario of the PSB. तो जैसा अभी current scenario चल रहा है PSB का, as per that we are going to release new reform. So every year whatever reforms are being, we can say, revised for the PSB, they are being monitored every after 3 months. That means after every quarter these reforms are being checked or monitored by the IBA. ठीक है, आगे देखते हैं हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब ईज 8 आ चुका है, राइट? तो ईज 1 भी आया था सबसे पहले, राइट? 1.0, देन 1.2, 2.0, राइट? ऐसे करके कितने सारे आ गए ईज 8.0, राइट? तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ मेनी थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड, हम उसका ट्रैक लेंगे. ठीक है, तो what they are saying that better complaints handling, that over the period of time the PSBs are now able to track their complaints, their customers complaint. And why? Because they have we can say allocated a tracking system as well, wherein they are fastly resolving the doubts of the, or we can say the complaints of the customer. ठीक है, कस्टमर की कंप्लेंट, एसेट क्वालिटी, यानी कि उनके जो बैड लोन्स थे अब वो कम हो चुके हैं. वाई? बिकॉज इन सब सिस्टम्स की वजह से, जैसे कि क्रेडिट ब्यूरो चेक्स, ऑटो कलेक्शन ऑफ कंपनी फाइनेंशियल डाटा, बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस, जीएसटी डेटा. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जितनी भी कंपनीज हैं, हम उनका डेटा चेक करते हैं बिफोर वी गिव अ लोन टू देम. तो ऐसे क्रेडिट ब्यूरो चेक्स जिनके पास इन्हीं इंडिविजुअल्स की और बिजनेसेस की क्या होती है, कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं. और कंपनीज का हम क्या देखते हैं, जीएसटी डेटा और बैंक स्टेटमेंट देखते हैं. वी एनालाइज देम एंड बिफोर गिविंग अ लोन टू देम वी एनालाइज एंड सी दैट वेदर दिस पर्सन और कंपनी इज वर्थफुल इन गिविंग द लोन और नॉट. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी बढ़ा ली है. Easier account opening, they have digitalized the system of opening the account. So they have made a particular cell, specified cell है उनके पास, department है, which helps the individuals in opening their account digitally. Strong IT system, 11 PSBs ऐसे हैं जिन्होंने क्या सेटअप किया है, resilience operation centers खोले हैं. What these centers do? These centers help in covering
और रिकवरिंग फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, मान लीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पीएसबीज अब अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, इनका डे टू डे ऑपरेशन एकदम सही से चल रहा है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इनका पूरा ऑपरेशन जो थे, जितने भी ऑपरेशन थे इनके चलते थे, वो कोलैप्स हो गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम स्टॉप्ड। सो दिस सेंट अस हेल्प टू रिकवर दीज ऑपरेशंस बैक। सो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बैक अपनी नॉर्मल स्टेटस पे आ जाते हैं इनके ऑपरेशंस। सो दीज सेंटर्स आर बीइंग वी कैन से set up by the PSBs as a backup for the PSB। तो ऐसे कितने बैंक्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है? 11 बैंक्स हैं। Then use of AI, that means they are now using the artificial intelligence in their day-to-day operation to increase their efficiency and to increase the customer services as well। यानी कि कुछ ऐसी complaints होती हैं which are very general in nature, तो उनको help करने के लिए they have allocated artificial intelligence for that, right? With this they are able to resolve the complaints of the customer in a better way or in a faster way। 5 government banks ऐसे हैं which have now included a disabled people and senior citizen in their important teams। यानी कि now they are trying to include these people as well, that means disabled people, that is Divyangjans, and senior citizens in their important teams named as customer service and complaint handling, because these are the people who can tell at the ground level that what kind of problems that they face on day to day basis। When they will give their input, their overall operations will get effective for the end users, say Divyangjans and the senior citizens, right? Bad loan recovery, that means they are able to recover their amount with the help of WhatsApp chatbot and voice bots। Now these are being used in order to give a reminder to the individual that आपकी EMI अब आपका भरने का टाइम हो गया है। These are just we can say set by the banks so that they can give a reminder on the EMIs to the borrowers। तो इससे एक credit discipline भी increase होता है in the market, and this is how they have improved their recovery mechanism as well। आगे देखते हैं what else they have improved। PSB have digital tool portal platform for monitoring the SARFAESI DRT NCLT cases। देखिए, जो बैंक्स हैं उनके पास 3 ऐसे मैकेनिज्म है, 3 ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो रिकवरी कर सकते हैं व्हेन अ लोन बिकम्स अ बैड लोन, राइट? व्हिच आर सारफेसी, डीआरटी, एनसीएलटी। एनसीएलटी जब बिग कंपनीज और बिग केसेस, बिग वैल्यू केसेस हो जाते हैं और वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, एंड देन दे गो टू एनसीएलटी। सारफेसी में दे गेट अ पोजेशन ओवर द एसेट्स ऑफ द बोरोवर, ठीक है? तो ये राइट देता है टू द बैंक्स टू पोजेस द एसेट्स ऑफ द बोरोवर, ठीक है? उन्हें पोजेस कर सकता है, उन्हें सेल कर सकता है टू रिकवर देयर अमाउंट। And so and so for DRT, for small cases, there is a dedicated place wherein banks can file the case regarding the borrower that they are not repaying the amount। ठीक है, तो ये 3 ही मैकेनिज्म है बैंक्स के पास। Now these 3 mechanism will be helpful for banks if they can track their each and every case। Now there are number of cases and they cannot deal each case one by one, so they have built a platform, a portal wherein they can track all their cases at one place। So this have we can say a legal case tracking has been done over the period of time, wherein PSBs are now tracking what is the recovery rate of my defaults। Then full digital banking. Now they are ensuring that we are making sure that each and every personnel, especially MSMEs, rural areas, retail, agricultures, all these are getting digital banking so that they do not have to visit bank branches again and again for say loan or for opening a bank account। Okay, so all these things are being initiated by the PSBs। इसके अलावा we are going to discuss about the key facts। Now these key facts are really very important। Why? Because you can highlight it और ये directly भी आपसे पूछे जा सकते हैं regarding the PSBs। Okay, तो ये आप याद रखेंगे that these are only regarding the public sector banks। तो प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कितना इंप्रूव है। प्रॉफिट हैव रीच्ड टू 1.78 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है, विच वर इन लॉसेज इन 2018। वो बैंक्स जो 2018 में लॉसेज में थे, हाउ मच लॉस? 85,371 करोड़ के लॉसेज में थे, बट नाउ दे आर इन प्रॉफिट ऑफ 1.78 लाख करोड़। सो वी कैन सी दैट यस इंप्रूवमेंट हैव बीन मेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। If we talk about the return on total assets, उनके जितने भी assets हैं, यानी कि उनके लोन हो गए, राइट? लोन ही होता है प्राइमरी एसेट एक बैंक का, ठीक है? तो वहां से उनको एनुअल
बेसिस पे ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल रहा है, हाउ मच दे आर अर्निंग। तो पहले 2018 के अराउंड दे वर अर्निंग नेगेटिव return on assets, which is 0.87%. But now their we can say return on assets is been increased to 1.10%. So this has been improved. बैंक बैड लोन्स कितने कम हुए हैं? सो पहले कितने थे? 14.58%, which is very huge at the time of 2018, and now it is just 2.10% on an average basis in financial year 2025. अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, देखिए कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ. RBI looks at these few indicators which we have discussed like profitability, bad loans and capital adequacy to judge that whether this bank is financially healthy or not. तो capital adequacy बताता है that how much capital do we have as compared to our risk weighted assets, right? तो हमारे रिस्क जितना है उसके कंपैरिजन में हमारे पास कितना कैपिटल है. अगर उससे ज्यादा होगा रिस्क से अकॉर्डिंगली, रिस्क से कंपेयर करें अगर हमारा कैपिटल ज्यादा है, इट इज गुड फॉर द बैंक. So more it is, the good it is. So earlier it was 11.45% in say March 2015, and now it has been increased to say 15.46% in December 2025. So see, this is a very great improvement that has been done over the period of time. Then no weak banks. See, एक पीसीए फ्रेमवर्क होता है किसका? आरबीआई का. पीसीए फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर prompt corrective action. What it stands for? Prompt corrective action. Now, any bank who is being, we can say, fall under this particular action or framework of the RBI, we call that bank as a weak bank because there is one single indicator or more than one indicators which are not as per the RBI's regulation. ठीक है, इसे हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आरबीआई कहता है कि आपको सीआरआर यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी कितनी मेंटेन करनी है? कम से कम 12% मेंटेन करनी है. बट देयर इज अ बैंक, से बैंक वन, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दिस कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 12%. They are maintaining 10% as of now. So bank says, oh, you are under the PCA framework because you are not able to comply with this particular indicator. Okay, so you will fall under this PCA framework. So any bank who fall under this particular framework, prompt corrective action framework, we consider that bank as a weak bank. What RBI do for these bank? RBI take action against these banks such as इन्हें कुछ restrictions लगा सकते हैं so that over the period of time they improve their capital adequacy. ठीक है, तो इन्हें कुछ restrictions लगाते हैं. We are not going into too much detail, but what I need to tell you through this is that PSBs तो पहले 11 थे. Out of 21 banks, 11 banks were earlier under the RBI monitoring of PCA. ठीक है, prompt corrective action framework में fall करते थे, but now there is 0 banks who are under this PCA. So we can say yes, this is a good, we can say, news for the PSBs wherein no bank is under the PCA monitoring of the RBI. Okay, ईस्ट 8.0 की बात करते हैं. अब over the period of, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है टाइम, but we have discussed is about the ease and about the PSBs and their growth. And now we are going to talk about the ease 8.0. तो इनकी इस बार की थीम क्या है? ease rise. Rise stands for risk and resilience, innovation, social economic impact and excellence. रिस्क एंड रेजिलियंस का मतलब है, रिस्क यानी कि आप अपना लोन जो आप देते हैं वहां से आप अपना रिस्क कम करेंगे और रेजिलियंस बढ़ाएंगे. दैट मीन्स योर पावर टू बाउंस बैक फ्रॉम स्ट्रेसफुल सिचुएशन टू अ नॉर्मल सिचुएशन, दैट रेजिलियंस मस्ट बी देयर. उसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए? बैकअप सेंटर्स होने चाहिए, राइट? तो इसी की बात करेंगे हम आने वाली अपनी स्लाइड्स पे. Innovation, that means include more and more technology, include more and more artificial intelligence in your operations so that it is fast and effective at the same time, while you are going to look at the cyber threat as well because हमें risk को भी manage करना है. Then socio-economic impact, that means you as a bank, how can you help businesses, this entire economy or individuals to build their future. ठीक है, तो उन्हें help कैसे करोगे you as a bank? तो उसके लिए आपको you need to think that what you are contributing towards this economy as a socio-economic impact. And then excellence. At best, you need to work at best. You have to achieve excellence where everything is working fine for the PSPs, right? Okay, तो आगे चलते हैं.
सो यहाँ पर मेजर 4 इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर दिस ईज फ्रेमवर्क, विच इज गवर्नेंस, कस्टमर सर्विस, डिजिटल लैंडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक एक करके पढ़ते हैं। तो अंडर गवर्नेंस यू कैन सी that they are working on the Divyangjans and the senior citizen. They are saying that we need to include now onwards these people in the customer service committees and complaint handling teams as well. अभी के लिए there are only few banks which are following this rule, but now they are saying that we are going to include that as a reform. Now all other banks have to follow this particular activity as a part of governance. Then special accessibility cell created to help them. एक cell बनाया जाएगा, a dedicated cell will be created for these people, that is Divyangjans and senior citizens, so that they can help them accordingly as per their need. Because there is a language issue, there could be some other kind of requirement in order to deal with such kind of people, and that is the reason a special cell will be created. Then we have better training and learning system for the employees. We have to train our employees in order to deal with such kind of customers, right? And then ESG at score. They are saying we need to improve the score of ESG, that is your environment, sociability and governance. ठीक है, ESG, right? ठीक है, तो इनके ऊपर भी हमें काम करना है, एनवायरमेंट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, राइट? एंड स्पेशल टीम टू रिटेन द कस्टमर्स, बिकॉज ये सबसे पुरानी प्रॉब्लम है पीएसबीज की, क्या कि वो कस्टमर्स को रिटेन नहीं कर पाते, बिकॉज customers are not liking the services of the PSBs and hence they are not able to retain these customers, and customers are leaving their, we can say, accounts with the PSBs, right? And they are going to private banks. So we are now have a dedicated special teams in order to retain the customers, right? आगे देखते हैं कस्टमर सर्विस में क्या करना चाह रहे हैं. सो कस्टमर सर्विसेज में दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड मोर एंड मोर बैंकिंग प्रोडक्ट्स which are dedicatedly for the youth, women, startups and gig workers. So depending upon who your customer is, we are going to introduce a customized banking product for you, right? This is going to give a, we can say, a edge to the PSBs. Then we have some customers get virtual relationship managers फॉर इजी डिजिटल अकाउंट ओपनिंग एंड प्रोसेसेस. तो वो कह रहे हैं एक कस्टमर्स को डिपेंडिंग अपॉन हाउ वैल्यूएबल दैट कस्टमर इज, आपको एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स मिल सकते हैं. DRT stands for Debt Recovery Tribunal. Okay, Sonika, DRT stands for Debt Recovery Tribunal. Fine. Yes. So we were discussing about the virtual relationship managers, यानी कि एक managers आपको allot किए जा सकते हैं depending upon the customer and they will help you for various kind of digital banking services. शायद वो opening digital account open के लिए भी हो सकता है और कोई और services के लिए भी हो सकता है. Then service available in the regional languages and better mobile banking apps for regular customers and MSMEs. ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में आपको सारी सर्विसेज दी जाएंगे विच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर द कस्टमर्स स्पेशली इन द रूरल एरियाज. ऑल्सो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विल बी special, we can say, mobile banking apps will be created for the MSMEs and the regular customers so that they can access their day-to-day services with the bank without visiting to the bank branch. Self-service facilities for disabled customer. Now, disabled customers की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, that they are always dependent on someone, ठीक है, for some kind of services. Now they are introducing a services which can be independently accessed by the disabled customers. तो यहाँ पर उनको independence दे रहे हैं that they themselves can access a particular service. So self-service facilities will be now given to the disabled customers so that they feel that empowerment with themselves, right? Fully digital system for the trade finance services. तो बेसिकली होता क्या है, एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स क्या करते हैं, अभी फिलहाल के लिए बैंक्स को ऑन पेपर अपनी सारी बिल्स भेजते हैं, राइट? ऑन पेपर्स दे गिव एवरीथिंग इंक्लूडिंग द पेपर, राइट? तो वो सारे फिजिकली पेपर्स ट्रांसफर करते हैं टू द बैंक. नाउ द बैंक इज नाउ गोइंग टू से दैट we are going to have a fully digital system wherein importers and exporters are now going to put all the details in the digitally form. So they do not have to send their papers to us.
ठीक है, तो पेपर वर्क और टाइम को कम किया जा रहा है यहाँ पर, एंड दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड द डिजिटल सिस्टम इन ऑर्डर टू गिव डे to day information regarding their export and import transactions. So it is easy for the exporters and importers as well to track their transaction, whether it has been cleared by the bank or not. Okay, so it is a win-win situation for the bank as well and for the exporters and importers as well, right? Let's just move ahead. Now we have digital lending. So as the name tells you that we are now going to include more and more digitalization in terms of loan while we are giving loans, right? So connected with the AA system, that is account aggregators are the one which are keeping the data and information of their customers. Okay, when banks are getting more and more, we can say, connection with these kind of system, they are going to make informed decision while they are giving a loan to somebody. ठीक है, तो सबसे से ज्यादा अगर अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, दे कैन हैव अ सेफ लेंडिंग. सेफ लेंडिंग का मतलब क्या है? दैट लोन उसी को देंगे विच दे फील दैट क्रेडिट वर्थिनेस उसकी अच्छी है. तो अगर अच्छी नहीं होगी, दैट वी कैन सी थ्रू दिस गिवन इंफॉर्मेशन बाय दिस AA सिस्टम. ठीक है, लोन्स आर अप्रूव्ड फास्टर using the data analysis and artificial intelligence. They are saying that we are imposing or we are implementing a system, artificial intelligence system, that is going to analyze the entire data of the creditor, sorry, not of the creditor but the borrower. It can be individual and the company, right? तो उनका data analyze करेंगे and we will see that what is the credit worthiness of that particular person. इससे क्या होगा? That speed of lending or dispersing the loan will be faster. It will be faster. It is going to be very easy for the customers as well, and it is going to be very easy for the, we can say, bank as well. Then assisted digital processes, help available if needed. That means we are going to have a digital processes throughout the banking services. अगर कोई need होगी in between, the help will be available with if needed. तो एक assisted digital processes follow की जाएंगी, जहाँ पर हर एक step पर we can give you assistance, we can help you throughout the business processes or throughout the banking processes. लोन्स फॉर रिटेल कस्टमर्स, एमएसएमईज एंड फार्मर्स, तो ये और भी ज्यादा इन्फ्यूज किया जा रहा है. हमने अभी पहले ही पढ़ा कि एक डिजिटलाइज फॉर्म कुछ बैंक्स हैं जो पर्टिकुलरली किसके लिए काम करें, एमएसएमई और फार्मर्स के लिए काम करें, ताकि वो डिजिटली सारी सर्विसेज एक्सेस कर पाए. बट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिफॉर्म दैट दे हैव टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज टू फार्मर्स एंड एमएसएमईज इन डिजिटल फॉर्म. ओके, तो ये हम पढ़ चुके हैं फुली डिजिटल सिस्टम फॉर द ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज. This is the last initiative, which is risk management. Risk management कैसे करेंगे? By tracking the risk on an early basis. They are going to track the risk on an early basis and give early warning signal. When they get to know about their risk on an early basis, they can act accordingly and respond accordingly early way, right? तो earlier ही उसे सबसे ज्यादा handle कर सकते हैं, और it is not getting too much. हम कह सकते हैं it is not getting too late to deal with it. So preventions are better than cure. This is what they are trying to do here. Strong checks to prevent fraud, money laundering, and detect the fake accounts. So basically, they are saying that we are going to infuse the digitalization and artificial intelligence. जहाँ से we are going to detect the fraud, transactions, money laundering activities, and detect the fake accounts. This will be helpful for the banks. Assisted digital process, इसमें भी क्या होगा? असिस्टेंट डिजिटल प्रोसेस होगी फॉर द बैंकिंग एज वेल एंड फॉर द कस्टमर एज वेल. स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम फॉर द सेफ्टी सच एज रेजिलियंस ऑपरेशन सेंटर्स, तो वही आप अपने बैकअप सेंटर्स क्रिएट करेंगे सो दैट यू आर रेजिलियंट इनफ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस. ऐसा ना हो कि आपका ऑपरेशन किसी की वजह से कोलैप्स हो गया है, मान लीजिए कोई साइबर रिस्क की वजह से कोलैप्स हो गया एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग बैक योर ऑपरेशंस एट द नॉर्मल स्टेटस, राइट? तो उसे यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है दैट यू हैव अ इनफ बैकअप. देन थर्ड पार्टी रिस्क कंट्रोल, दैट मींस कभी कभार क्या होता है, बैंक्स अपने बहुत सारे ऑपरेशंस जो कि उनके हाथ में नहीं, जो उनका कोर ऑपरेशन नहीं होता, जैसे कि एचआर रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, वो थर्ड पार्टी को दे देती हैं, राइट? अब थर्ड पार्टी कोई इंफॉर्मेशन भी लीक कर सकती है. यू एज अ बैंक यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, एंड हेंस आपको थर्ड पार्टी रिस्क कंट्रोल भी करना है, वेर इन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर थर्ड पार्टी एंड यू हैव इनफ, वी कैन से, मैनेजमेंट विद देम सो दैट you can ensure that they are not sharing any of your confidential data. Ready to handle the cyber attacks. Obviously, you as a PSB, you need to be very, we can say, strong enough to deal with any cyber attack.
and digital tools to track the loan recovery and collection. तो ये तो आप साथ के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्या आ रहा है, रिस्क आ रहा है, क्रेडिट रिस्क आ रहा है। लोन से आने वाला कोई भी रिस्क इज क्रेडिट रिस्क। तो उसको कम करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रैक योर ईच एंड एवरी लोन। आप अपने सभी लोन्स का ट्रैक रखें एंड सी दैट हाउ देयर रिकवरी इज गोइंग ऑन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ईज राइज फाइनेंशियल ईयर 26, ईज 8.0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, विच इज ग्रोथ इन द डिजिटल पेमेंट्स। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड RBI एंड NPCI and their joint effort, we can say the digital payments have been increased over the period of time. As we can see that why there are so many, we can say, digital payment increase. We can see here in financial year 22, the digital payments, the retail level digital payments in financial year 22 in terms of volume, was 7,176.90. But now in financial year 25, it is 22,167.90. Right? This is almost showing a growth of 35.04% from previous year, that is financial year 24. फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी थी ग्रोथ, 16,416.02। ठीक है, तो यहां से जितना भी हमारे पास ग्रोथ आई है, दिस इज दिस 35.04, विच इज ह्यूज। गुड ग्रोथ हैज बीन सीन इन द डिजिटल पेमेंट्स। इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, दैट मीन अगर हम रुपीज में देखें तो ये सब जो अमाउंट है ये करोड़ में है, ये करोड़ में है। ओके, सो अगर हम पहले 21 से कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 21 से, सो इट वाज 457.44 करोड़, बट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 849.12 करोड़। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो इट वाज 719.37। सो सी दिस इज शोइंग अ ग्रोथ ऑफ हाउ मच, 18.04%। तो हमें क्या पता लगता है यहां से, आपको क्या एनालिसिस करना है, आपको यहां से ये एनालिसिस करना है दैट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की ग्रोथ ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू वैल्यू की ग्रोथ, यानी कि पीपल आर मेकिंग और यूजिंग दिस डिजिटल पेमेंट्स इन ऑर्डर टू मेक लार्जर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, बट देयर वैल्यू हैज बिन डिक्रीजिंग। यानी कि आप छोटी छोटी पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं ऑन लार्ज अमाउंट, से 10 रुपीज की आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू डिजिटल पेमेंट, और 20 रुपीज की कर रहे हैं, और 100 रुपीज की कर रहे हैं। दीज आर स्मॉल वैल्यू, हम कह सकते हैं ट्रांजेक्शन, इनकी वैल्यू कम है, बट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यू आर मेकिंग इज 3, राइट? सो आपका वॉल्यूम इसीलिए ज्यादा है एंड योर वैल्यू इज बिंग लेस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग। What are other achievements? So RBI have created a payment infrastructure development fund. This is a fund. This is a fund which pools the money, in order to increase the digital payment in rural areas. जहां पर QR कोड जैसी सर्विसेज, इंटरनेट जैसी सर्विसेज, और QR, हम कह सकते हैं डिजिटल पॉइंट सेंटर्स नहीं है जहां पर आप डिजिटल पेमेंट्स कर पाए। तो ऑल दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल। तो इसके लिए एक फंड क्रिएट किया जा रहा है विच विल बी इम्प्लीमेंटेड और इन्वेस्टेड हेयर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिजिटल पेमेंट्स सॉरी इन रूरल एरियाज एज वेल। ठीक है, तो थ्रू दिस पर्टिकुलर फंड व्हाट they have achieved of the period of time, so 5.8 crore payments point have been installed, जो कि ऐसे मर्चेंट्स हैं, ऐसे वेंडर्स हैं जिनके पास क्या आ गया है, अब पेमेंट पॉइंट आ गया है, पेमेंट डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पेमेंट्स पॉइंट आ गए हैं, एंड देन नाउ दे कैन एक्सेप्ट द डिजिटल पेमेंट्स। 56 plus crore of QR codes are now available in the rural area through this particular fund. So again, this is the achievement of the RBI. Then financial awareness के लिए there are 2,421 financial literacy centers. These are the centers which increases the financial literacy and financial awareness in the rural area and semi-urban areas, right? So they conduct what? The financial literacy week every year. They conduct financial literacy week every year to increase the financial awareness among the women, among the rural areas and their people respectively, and semi-urban areas. Okay, so we are moving ahead. Okay,
So in this entire analysis that we have discussed here, the numbers, they are saying 81% of all the digital payments are related to UPI. So UPI is one of the biggest system that is, we can say, promoting and encouraging digital payments in India. What are other reasons? People now have more smartphones. They have Aadhaar verification done, which is allowing them to make the digital payments. Easy KYC, KYC बहुत आसानी से हो रहा है. That is the reason they are able to do such thing. अब देखिए जो आधार, ये इजी केवाईसी है, ये क्या है? डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, विदाउट विच डिजिटल पेमेंट आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो सकती थी. तो दीज आर सम पिलर्स ऑफ योर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनका डायरेक्ट लिंक शायद आपको अभी समझना है, बट विदाउट अ वी कैन से अपग्रेडेड केवाईसी, विदाउट आधार कार्ड, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होंगी. ठीक है. मोर पीपल आर यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज. अब लोगों को बैंकिंग सर्विसेज पे ज्यादा ट्रस्ट है एंड दे आर यूजिंग इट excessively. More shops accepting digital payments, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा merchants and vendors are accepting the digital payments, and hence customers are also using digital payments to make the transaction happen. Digital infrastructure, again digital infrastructure है आपके पास, that is the only reason that you are able to make the digital payments. And government is also promoting digital payments by giving their schemes or their subsidies through the digital payment only. जिससे क्या हो रहा है कि इनका लीकेज भी कम हो रही है. दैट मीन्स फंड लीकेज, जो ये पेंशन फंड्स मान लीजिए, अगर ये दे रहे हैं किसको, इंडिविजुअल को, अगर फिजिकली देंगे तो देर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग लीकेज ऑफ फंड्स, बट नाउ दे आर बीइंग डिजिटली डन, तो देर इज वेरी लेस leakage, right? But there are some challenges in the digital payments as of now. माना कि बहुत अच्छा चल रहा है हमारा डिजिटल पेमेंट, पर ऐसे कुछ एरियाज हैं जिसपे हमें आज भी काम करना है. बट आर दीज आर साइबर फ्रॉड रिस्क. देखिए साइबर थ्रेट बढ़ता जा रहा है, और हम कह सकते हैं जो हैकर्स हैं वो और भी ज्यादा क्लेवर और स्मार्ट होते जा रहे हैं विद द इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी, एंड दे आर गुड एट फाइंडिंग द लूप होल्स. ठीक है, तो वहां हमें काम करना है, दैट वी नीड टू रिड्यूस दैट लूप होल्स. यूपीआई से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एंड दैट वी नीड टू टेक प्रिकॉशन ऑफ. देन लैक ऑफ अवेयरनेस. अभी भी कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं पहुंची है, एंड दैट इज द रीजन डिजिटल पेमेंट अभी वहां तक इन्फ्यूज नहीं हुई है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. अगेन एजेंडा इज to increase the digital payments so that we can track the money, that where it is going and from where it is coming. तो ऐसे जो केसेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉडस्टर, ऐसे सब चीजों को ट्रैक किया जा सकता है, राइट? तो पुअर कनेक्टिविटी, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अनदर चैलेंज दैट वी नीड टू वर्क ऑन. अभी तक कितने कितने स्टेप्स लिए गए हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द डिजिटल पेमेंट. ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा अच्छा करने के लिए क्या क्या काम हुआ है? तो पहले तो है हमारे पास डीओटीज चक्षु प्लेटफॉर्म. दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन द इंडिविजुअल हु हैज बीन बीइंग फ्रॉडेड, है ना, उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, या फिर उसको किसी ने फेक कॉल करी है, कोई भी उसके पास मतलब कि डिजिटल फ्रॉड होता है उसके साथ, दे कैन रिपोर्ट इट एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म विच इज अवेलेबल एट द डीओटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड देन to reduce any further fraud and bank system, what they have done कि उन्होंने फोन को और सिम को दोनों को बाइंड कर दिया है. दैट मीन्स नाउ द फोन एंड द सिम आर कनेक्टेड. इससे क्या होगा दैट whenever a device is making a payment, they can check the SIM and the phone and they can ensure that yes, this is the right person who is making the payment. Then pin based verification. दो और फैक्टर्स ऐड कर दिए गए हैं इन योर फैक्टर सिक्योरिटी, यानी कि आपसे एक बारी ओटीपी मांगेंगे, फिर आपसे आपका पिन मांगेंगे, एंड देन ओनली यू आर एबल टू मेक द पेमेंट्स. अगर आप यूपीआई की एप्लीकेशन भी खोलते होंगे, देयर इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. जब आप यूपीआई की ऐप खोलते हो तब, एंड देन यू मेक द पेमेंट तब, राइट? जो भी आप पिन डालते हैं दैट इज रिक्वायर्ड. तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है दैट इंश्योर दैट वट एवर ट्रांजेक्शन दिस पर्सन इज मेकिंग इज ऑथेंटिक, राइट? डेली ट्रांजेक्शन लिमिट, एनपीसीआई ने डेली ट्रांजेक्शन लिमिट निकाली हुई है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि P2M के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ लिमिट्स हैं, P2P के लिए डिफरेंट लिमिटेशंस हैं. ठीक है, तो इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, बट देयर इज अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लिमिट्स दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द एनपीसीआई, सो दैट उससे क्या होगा, उससे ये होगा दैट ओवर यूज नहीं कर रहे, और एक लिमिट भी एक फ्रॉडस्टर को बचा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं एक इनोसेंट यूजर को बचा सकती है फ्रॉम गेटिंग टू मच मनी आउट ऑफ देयर बैंक बैलेंस ड्यू टू डिजिटल पेमेंट्स. ठीक है, तो अगर लिमिट होगी तो वो स्टॉप कर सकती है फ्रॉम मेकिंग द हैकर टू टेक आउट से 5 लाख और 10 लाख रुपीज ऑफ मनी फ्रॉम द डिजिटल अकाउंट, राइट? तो यहाँ पर वो भी सेट की हुई है. देन एनपीसीआई ऑल्सो यूजेस एआई सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉड.
एनपीसीआई ने अपने लेवल पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ है टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड, विच इज वेरी गुड, टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड पेमेंट्स। और ये हमारे पास है लास्ट न्यूज आज की, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल न्यूज है और बहुत इजीली समझी जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या है, आरबीआई ने इस नाम की रेगुलेशन में कुछ चेंजेस ला दिए हैं, जिसको वो बोल रहे हैं अमेंडमेंट। नाम क्या है रेगुलेशंस का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन 2026। तो जैसे कि आपने नाम पढ़ा, सबसे पहले तो ये फेमा से रिलेटेड है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। फॉरेन एक्सचेंज किसका, जी करेंसी का। दैट मीन्स करेंसी आ जा रही है बाहर से, इंडिया आ रही है, यानी कि डोमेस्टिक आ रही है, या फिर डोमेस्टिक से बाहर जा रही है। बट ये जो पर्टिकुलर रेगुलेशन है, ये किसकी बात कर रहा है, करेंसीज जो बाहर से इंडिया आ रही है। से राहुल है, वो यूएसए में था, और यूएसए से कहाँ आ गया, इंडिया आ गया, और वहां से कुछ डॉलर्स लेकर आया इंडिया में, डॉलर्स लेकर आया इंडिया में, ठीक है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस केस। तो ये क्यों निकाली इन्होंने रेगुलेशन, तो दैट इज वेरी सिंपल, टू ब्रिंग मोर फॉरेन करेंसी इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आए। दिस इज द होल एजेंडा ऑफ द रेगुलेशन। अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, एजेंडा पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डिक्लेयरिंग द फॉरेन एक्सचेंज। ये राहुल जितनी भी लेकर आया है अपने पास फॉरेन करेंसी, इसे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितनी लेकर आया है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन जो है वो इन्होंने इंक्रीज कर दी है, ताकि पता चलता रहे कि कहां से कितनी करेंसी कब आई और कौन लेकर आया, तो उसका इन्हें ट्रैक रहे। देन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। और ये कैसे ट्रैक करेंगे, ये इन्होंने फॉर्म निकाल दिया है, करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें जो राहुल है अपनी सारी डिटेल्स डालेगा कि अपने 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 साथ क्या क्या लेकर आया, डॉलर्स लेकर आया, कितने नोट्स लेकर आया और कितने के नोट्स लेकर आया, से 10 के नोट्स लेकर आया, ठीक है। उसके साथ अगर ये चेक भी लेकर आया, तो चेक भी इसे कंसीडर किया जा रहा है, किसमें, करेंसी में कंसीडर किया जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां पर राहुल अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरेगा। फॉर्म के बारे में मैम हमें पढ़ना है नहीं, फॉर्म नहीं आपको याद करना, आपको बस लिमिट्स याद करनी है, जो मैं अभी बताऊंगी। अब ये जो रेगुलेशन है, दीज आर गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 24 फरवरी 2026। तो जैसे ही इन्होंने फाइनल कर दिया था, तभी इन्होंने निकाल दी थी, और आज इन्होंने फाइनलाइज कर दी। ओके, सो अब ये फॉर्म कब भरना है, यानी कि आपके पास जो सीडीएफ फॉर्म है मैम, वो कब भरना है, वो तब भरेंगे जब ये दोनों लिमिट एक्सीड हो जाएंगी। अगर इससे कम है तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू फिल दैट पर्टिकुलर फॉर्म। तो मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं, अगर तो कोई इंसान स्मॉल वैल्यू लेकर आ रहा है, स्मॉल वैल्यू फॉरेन करेंसी लेकर आ रहा है, फिर तो उसे पेपर वर्क के झंझट में नहीं डालने की जरूरत, ठीक है। उसे आसानी से जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कस्टम वेरिफिकेशन नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी इजी, ठीक है। तो कितना होना चाहिए मैम लिमिट, टोटल, टोटल फॉरेन एक्सचेंज अगर तो $10,000 से कम है। टोटल फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कैश भी और चेक भी, क्योंकि चेक भी कहाँ रिजॉल्व करवाएगा, चेक भी कहाँ सेटल करवाएगा, इंडियन बैंक के साथ सेटल करवाएगा, तभी इंडिया लेकर आया, तो इसे भी कंसीडर किया जा रहा है। तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज हो गया आपका चेक प्लस कैश। अगर चेक और कैश दोनों प्लस करके $10,000 से कम है, देन सीडीएफ रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर सिर्फ फॉरेन करेंसी नोट्स लेकर आ रहा है, यानी कि सिर्फ डॉलर्स लेकर आ रहा है इन करेंसी नोट्स, और वो 5,000 रुपीज से कम है, 5,000 सॉरी डॉलर्स से कम है, देन सीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर एनी ऑफ दीज लिमिट्स आर एक्सीडेड, देन यू हैव टू फिल द सीडीएफ फॉर्म, और वो आपको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा एट द कस्टम वेरिफिकेशन एज वेल, जब आप चेक क्लियरेंस करवाएंगे तब भी, ठीक है। बस इतनी सी थी ये लिमिट, आपको 10,000 और 5,000 की लिमिट याद रखनी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। मान लीजिए राहुल आया यूएसए से, कहां पर, इंडिया में आया, वो अपने साथ 3,000 रुपए का क्या लेकर आया, हम कह सकते हैं चेक लेकर आया डॉलर्स में, और 6,000 रुपए का, सॉरी, $6,000 का क्या लेकर आया, करेंसी नोट लेकर आया, ठीक है, करेंसीज लेकर आया, फॉरेन करेंसी, राइट। अब जब उसने जैसे ही इंडिया में एंटर किया एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे उसने देखा, कस्टम ने देखा दैट यू हैव अ मोर देन 6,000 रुपीज 5,000 रुपीज ऑफ कैश। देखिए यहाँ पर लिमिट इसकी क्रॉस होगी ना, ये वाली कैश वाली, तो यहाँ पर कह रहे हैं जी यू नीड टू फिल दिस सीडीएफ फॉर्म दैट विल बी चेक्ड बाय फर्दर कस्टम्स एंड बैंक्स व्हाइल यू आर कन्वर्टिंग योर करेंसी इनटू रुपीज, ठीक है। तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी इफ यू फिल आउट दिस फॉर्म एट दिस प्लेस।
ओके, चलिए पर्पस क्या है जी? पर्पस बहुत ही आसान है, टू हेल्प करेंसी एक्सचेंज आराम से हो जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस ना हो, कस्टम वेरिफिकेशन में बहुत आसानी रहेगी, और रिकन्वर्जन दैट इज रुपी टू फॉरेन करेंसी करने में बहुत आसानी रहेगी, राइट? सो देयर वुड बी नो केस ऑफ से मनी लॉन्ड्रिंग, एंड दे कैन आस्क कि आप ये इतना पैसा कहाँ से लेकर आए, वो सब कस्टम वेरिफिकेशन का काम है, ठीक है? क्वेश्चंस, यस आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? यस, द ईज रिफॉर्म्स वर introduced to enhance the operational efficiency and governance in the PSPs. Which institutions primarily oversees and guides the implementation and review of ease reforms? So there are five options in front of you. SEBI, Ministry of Corporate Affairs, Indian Banking Association, Finance Commission, Competition Commission of India. Very good. Very good, Sonika. So C is the right answer. That is Indian Banking Association. Good. Question number 2. The Foreign Exchange Management Amendment Regulation 2026 introduced what? Currency Declaration Form, under which condition is submission of CDF mandatory for a passenger entering in India. What is that condition? तो आपको बताना है which condition is right in this case. A, B, C, D, E. आपके पास 5 options हैं. Okay. So what do you think is the right answer? Yes. Sorry. Yes, Gautam, you are right. C is the right answer. Both the conditions must be मतलब कि both the conditions are being stated here. ऐसा नहीं कि आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. आपको दोनों ही कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस, ठीक है? तो सी इज द राइट आंसर. गुड सोनिका. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. UPI 123 Pay and Hello UPI were introduced primarily to address which challenge in the digital payments. ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं डाला, बट हैव इंट्रोड्यूस्ड, वी कैन से स्टैटिक से मैंने उठा लिया ये क्वेश्चन, स्टैटिक से उठा लिया. बताइए, मैं सब चेक करना चाहती हूँ, डू यू हैव एनी नॉलेज रिलेटेड टू स्टैटिक एंड अदर थिंग्स एज वेल? यूपीआई 123 पे और हेलो यूपीआई क्यों निकाला गया था? कैन यू टेल मी? ये दोनों कौन से चैलेंज को, यूपीआई के या फिर डिजिटल पेमेंट के कौन से चैलेंज को ओवरकम करते हैं? वी जस्ट डिस्कस्ड. तो बेसिकली अभी जो डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज कनेक्टिविटी इशू, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. उसके अलावा लोगों के पास ज्यादा स्मार्टफोन्स भी नहीं है एट रूरल एरिया. तो यूपीआई 123 एंड हेलो यूपीआई अलाउज द पर्सन टू मेक पेमेंट digitally without interconnectivity and featured phone, through their featured phone, that is through their we can say वो जो बटन वाला फोन होता है उससे दे कैन मेक द पेमेंट. नो, ई इज नॉट अ राइट आंसर. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द सेशन. ओके, नाउ दिस इज द फाउंडेशन बैच दैट वी आर लॉन्चिंग फॉर द आरबीआई ग्रेड बी, NABARD grade A and SEBI grade A as well. Okay, you can fill the form to have a free access to 2026, we can say, and the 2026 batches are, we can say, free to access this particular foundation batch. ठीक है, if you really want to go for this particular batch, foundation batch, you can fill the form and can apply for this particular respective examination. ठीक है, उसके अलावा वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग फ्री मास्टर क्लासेस. हमारी फ्री मास्टर क्लासेस चल रही हैं अभी, wherein I take finance related questions into session for the, we can say, for related to static random questions होते हैं to discuss about on those questions. तो इससे आपके different areas cover होते हैं. So I discuss that. I conduct that particular, we can say, मास्टर क्लास ड्यूरिंग 7 to 30 PM. ठीक है, 7 to 38 PM तक वो क्लास चलती है एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री. आप आ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लिंक शेयर कर दिया जाता है, राइट? यू कैन फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एंड दिस PDF विल बी ऑल्सो अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, दैट इज कंप्लीटली फ्री. सो आई वुड वेट फॉर यू
right? So with this we are done with the session. Okay, goodbye everyone, good luck. I hope you have understood everything. कोई doubt हो तो comments में बता देना, right? And best of luck.